my topic is prosthetic valve assessment. What is normal and what is abnormal? In fact, it is a big topic, and I would try to cover in 15 minutes time. So before starting the evaluation of prosthetic valves, there are certain key points. First of all, the clinical history is very important. So we must know what is the clinical indication, whether the patient is having fever, whether the patient is having shortness of breath, and in the presence of a mechanical prosthetic valve, whether the INR is properly maintained or not. Then we should have an idea about the flow state, whether the patient is anemic, in a hyperdynamic state or not. And if baseline study is available for comparison, and then it would be better to compare the results with the baseline study. And if you know the type and size of the valve, that would be again important and would be helpful. And before starting each echo, I think we should must note down the blood pressure and the heart rate, not only for the valvular heart disease, not only for the prosthetic valves, but for each patient. And again, the height, weight, and body surface area. And then go to the 2D images. And on 2D images, in case of prosthetic valves, we have to see the opening and closing of the leaflets on 2D images, as well as we would look for abnormal densities on the valve, whether they are present or not. Then we would put the Doppler, and putting the Doppler, we would take the peak velocity and the mean gradient. If the peak velocity and the mean gradients are elevated, then there may be three possibilities. One possibility is there may be pathological stenosis. The other possibility is there may be functional stenosis. And the third possibility is there may be significant regurgitation. In case of pathological stenosis, it may be either because of thrombus, maybe because of pannus, or maybe because of degeneration, in case of especially bioprosthetic valves. And in case of functional stenosis, it may be just the high flow state, or maybe tachycardia, or it may be patient process mismatch. And in case of significant regurgitation, it may be either paravalvular, paraprosthetic, or prosthetic. Now start assessing the mitral valve. So for the mitral valve, the peak velocity should be less than 1.9 and the mean gradient should be less than 5. So if the peak velocity is increased and the mean gradient is elevated, then the next thing you would look for is the pressure half time. If the pressure half time is more than 130, then it would likely be pathological stenosis, either because of the thrombus, because of the pannus, or because of degeneration. If the pressure half time is less than 130, it would be likely because of high flow state, or maybe patient process mismatch, or maybe pathological regurgitation. Then the next thing you would look for is basically the DVI. And in case of bioprosthetic mitral valve, the DVI cutoff is 2.3. If the DVI is more than 2.3, then it would likely be pathological regurgitation. And if the DVI is less than 2.3, then you have to look for effective orifice area index, because if effective orifice area is reduced, then it's the patient process mismatch. Otherwise, it may be just the high flow state. So starting with cases, these are the two similar kind of cases. Both have the 29 millimeter porcine mitral prosthesis, and both have the E velocity of 2.3 and the mean gradient of 9. However, in the patient 1, the pressure half time is 139, while in patient 2 is 51. So in patient 1, as the pressure half time is elevated, this is likely pathological stenosis. And while in patient 2, it may be high flow state, or maybe patient process mismatch, or maybe pathological regurgitation. Then the next thing is DVI. In patient 2, the DVI is 2, which is less than 2.2. So then, you have ruled out, or almost ruled out, the pathological regurgitation. And then two things which are left is either the high flow state or patient process mismatch. And now you would look for effective orifice area index. If it's less than 0.7, which is 0.7 in this case, so then it means this is patient process mismatch. Now come to the case 2. Case 2 is a 45-year-old woman, prior history of bioprosthetic mitral valve replacement, and presented with worsening shortness of breath. And here you see the Vmax is 2.6 and the mean gradient is 7. But before doing the Doppler, if you see the 2D images, you would see that the mitral valve is not looking normal. There is probably flail or prolapsing one of the leaflet. And as the mean gradient is 7 and the peak velocity is also elevated, the next thing is pressure half time, which is 121 in this case. So this is less likely to be pathological stenosis.
So the next thing is DVI, which is 3 in this case. So likely it would be regurgitation. When we put the color, it's significant regurgitation, and you can take the help of 3D echo as well in this case. Now come to the other case, a 45-year-old woman, prior history of bioprosthetic mitral valve replacement, presented with worsening shortness of breath. So I think वो repeat हो गया दोबारा से, I'm sorry. So the only parameter which is different for mechanical prosthetic valve is the DVI. DVI cutoff is 2.2 for mechanical valve. For bioprosthetic valve it was 2.3. So case 3 is a 30-year-old woman, status post mechanical valve mitral valve replacement and presented with cardiogenic shock. If you see the 2D images here, then you can see the leaflet mobility is not good. It's not normal. And if you see, there is probably something, sitting on the valve. And if you see the Vmax is 2.9 and the mean gradient is 27. It's very much elevated. And if you see the pressure half time is 255. So it's clearly the pathological stenosis and likely because of the thrombus there. Then come to the other case, a 52-year-old woman had mitral valve replacement with mechanical prosthesis in 2023, now presented with NYHA2 symptoms. And in this case, the pressure half time is 108, so pathological stenosis less likely. DVI is 1.9, so regurgitation less likely. And effective orifice area index is 0.67. So clearly this is patient prosthesis mismatch. Another case is a 32-year-old man, status post DVR August 2022, now with fever and worsening shortness of breath. In this case, the Vmax is 2.1, mean gradient is 7, and the DVI is 2.4. So the DVI is elevated, so likely to be due to MR. And again, if you see the transesophageal echo images in this case, you can appreciate that there are large vegetation as well as there is significant paravalvular mitral regurgitation. So this was the assessment of prosthetic mitral valve. Now come to the assessment of prosthetic aortic valve. For the aortic valve assessment, the peak velocity should be less than 3 and the mean gradient should be less than 20. So if the mean gradient and the peak velocity are elevated in case of prosthetic aortic valve, then the next thing you would look for here in the aortic valve case, the next thing would be DVI. If the DVI, you have to see, you can divide into 3 groups, whether the DVI is less than 0.25, whether the DVI is more than 0.3, or whether the DVI is in between. So the next thing you would look for is the jet contour and the acceleration time. So if you see the DVI of less than 0.25 and if the jet contour is more than 100, then it would be, and the jet contour is, circular, and the acceleration time is more than 100, then it would clearly be prosthetic aortic valve stenosis. While if the DVI is more than 0.3 or maybe 0.25 to 0.29 and the jet contour is triangular and the acceleration time is less than 100, then it would be normal valve. It may be high flow state or maybe patient prosthesis mismatch. Then the next thing you would look for is the effective orifice area index. So these are the 2 things in between, the 2 things which are on the 2 sides, right side, extreme right side and the extreme left side. These are maybe the errors, because if the DVI is less than 0.25 but you are getting the jet contour triangular and the acceleration time of less than 100, then probably you have done some wrong measurements, probably of LVOT VTI. Or if the DVI is more than 0.3 but the jet contour, which is rather more important here, is circular and the acceleration time is more than 100, then again likely you have taken the wrong reading of LVOT VTI. So case 1, a 71-year-old man with progressive dyspnea on exertion, past history of rheumatic valve disease, CABG plus mechanical AVR in 2010. So transthoracic echo was difficult to visualize the mechanical valve. However, we can see we can appreciate the Doppler parameters here. The velocity is 3.2, which is elevated. DVI is 0.18, so it's less than 0.25, and acceleration time is 150, and the jet contour is circular. So this is most likely pathological stenosis. So this fits in this case, the red circle,
less than 0.25 dvi, and the jet contour circular, and the acceleration time is more than 100. So this is likely pathological aortic stenosis. So do we need to do other images in this case? Yes, you can go for transesophageal echo, and you can go for CT or fluoroscopy to see the mobility of the leaflets. The next case is a 62-year-old woman with history of AVR, bileaflet mechanical valve, in 2008. She was on warfarin, but it was difficult to maintain the therapeutic INR in this case. She presented with 6 months history of progressive dyspnea on exertion. And here the velocity is 3.6, DVI is 0.33, जो दरमियान वाला रेंज है वो वाला. एक्सेलरेशन टाइम इज 110. सो एक्सेलरेशन टाइम जो है इसका वो बढ़ा हुआ है. सो ये यहाँ पर आ गया आपका DVI आपका 0.3 से ऊपर हो गया, एंड द एक्सेलरेशन टाइम इज मोर देन 100, and the jet contour is circular. So probably you have done some wrong measurements here. So in this case, when we repeated the measurement of the LVOT VTI, so actually previously the LVOT VTI was taken very close to the valve, and in this case when we took the LVOT VTI at a right place, then the DVI was 0.22. So now it's fitting with the first one. The DVI is less than 0.25, and jet contour already you were seeing that it was rounded or circular, and the acceleration time was already elevated. So jet contour and the acceleration time are rather more important in addition to the DVI, because you can do errors in measuring the DVI. The next case is a 66-year-old woman with history of AVR, St. Jude valve in 2021, presented with dyspnea on exertion, and here you can see the velocity is 3.4, DVI is 0.25, and the acceleration time is 90 or 0.09, and the jet contour is not circular, it's triangular. So it's fitting here. The VTI is 0.25, jet contour is triangular, acceleration time is less than 100, and here the effective orifice area in this case was indexed effective orifice area was 0.78. So this is patient processes mismatch. And in the last, the aortic valve regurgitation in the presence of aortic prosthesis, which is rather challenging because of shadows, because the jet is usually eccentric, and it's usually difficult to calculate the paravalvular leak. So the width of the vena contracta may be difficult to measure, and you have to take the off-axis views. So the last case is a middle-aged man with history of AVR couple of years back, now presented with shortness of breath and found to have hemolytic anemia. And here you can see, clearly appreciate that there is significant paravalvular aortic regurgitation. So that's the end of my talk. Thank you very much. If there is any question. Dr. Ipu has always excellent presentation. I have two queries. One is a comment, like younger people who are having AVR, generally they gain weight, and they gain weight significantly, like 15 kg, 20 kg. And then you assess them, they have increased gradients, and probably they are having a patient prosthetic mismatch because of the weight gain. So I would like you to comment on that. And number two is, I would like you to clarify more on the how to assess the pannus formation from the other things. Okay. So basically, sir, if you are doing the AVR in a very younger age, and if the patient is gaining weight, then definitely there would be, now it would behave like patient process mismatch, and you would treat like patient process mismatch in this case. Or maybe if it's possible, you can ask the patient to reduce the weight, because the patient process mismatch would behave like aortic stenosis in case of AVR. And in case of MVR, it would behave like mitral stenosis. And in fact, people have done the studies in case of MVR, and the outcome was bad in these patients, which have significant patient process mismatch. So this is a real practical problem. And I think if the patient is also symptomatic, and if there is significant patient process mismatch, now with the growing age and with the growing or increasing weight, then I think the other procedure would be necessary maybe. And the pannus, pannus growth, sometimes it's really difficult to differentiate between pannus and thrombus, but the consistency or the appearance of the pannus would be different from the thrombus, and it would be hard looking, and its appearance would be, while the thrombus would be soft looking,
and the pannus would be from the periphery, and usually a thrombus in the center. So there are a lot of features, and plus the clinical history is also important. If the patient's INR was not very well maintained, and the pannus patients usually the pannus would grow very slowly, and the presentation would not be very acute. While in case of thrombus, it would be rather more acute. So I think these may be the differentiating points. सर मेरा एक छोटा सा कमेंट है, और वो कमेंट ये है कि सर देयर वाज अ टाइम कि जब सर्जन जो है उसको जो एनालिस्ट मिलता था वो उसके अंदर वो वेल फिट इन कर देता था, ठीक है, सर्जरी कर, ठीक है, वो जो भी फिट हो जाए बस उसके अंदर वो फिट कर देता था. अभी ये है कि अभी थिएटर्स में हम उन्हें मल्टीप्लाई करके 0.85, ठीक है, इनटू बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है, और हम बताते हैं कि जी ये इफेक्टिव ऑरिफिस एरिया होना चाहिए, ये लगाना, ठीक है. अगर तो उनका वो वाल्व फिट इन होता है उसके अंदर, ठीक है, अदरवाइज यू विल हैव टू परफॉर्म द रूट डायलेटेशन, ठीक है. और वो उन्हें हम अब कंपल्सिवली कहते हैं कि नहीं जी ये आपको करना है, क्योंकि ये पीपीएम वाला जो प्रॉब्लम है ये बाद में हो सकता है, जैसे सर ने कहा कि अगर वेट गेन कर लिया, ठीक है, उससे हो सकता है, लेकिन ये अभी हम उन्हें कंपेल करते हैं. अदरवाइज पहले तो वो ये होता था बस ठीक है, और ठीक है नहीं होता था, वो बाद में भी ठीक है नहीं रहता था. तो ये अभी एक तो ये हो गया, और ये एओर्टिक के लिए 0.85 है, और जो माइटल वाल्व है उसके लिए 1.2 है, ठीक है, 1.2 है. और यही सर ने बताया कि जी वही इफेक्टिव ऑरिफिस एरिया, अगर उससे कम आ रहा है तो आप उसको पेशेंट प्रोस्थेसिस मिसमैच जो है वो लेते हैं. दूसरा, जैसे सर ने कहा कि जब भी 3 से ज़्यादा की एओर्टिक वाली साइड पे वेलोसिटी हो तो ज़रूर डीवीआई और उसका जेट का कंटूर देखें. 3 से ज़्यादा, बस ये 3 वाला नंबर याद रख लें. जब भी 3 से ज़्यादा वेलोसिटी है तो डीवीआई भी करना है और ये भी करना है. असल में ये चूँकि हम लोग थिएटर में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं वाल्व रिप्लेसमेंट्स और हम उनकी एको कर रहे होते हैं, तो आई थॉट कि इस वर्ष थैंक यू डॉक्टर फखर. आई थिंक दीज आर वेरी प्रैक्टिकल एंड गुड पॉइंट्स. एंड एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा यहाँ पर और वो कर दूँ, डॉक्टर सेल, आई एम सॉरी, आपका कमेंट लेता हूँ. वो जो डॉक्टर फखर ने कहा ना कि वो जो आप 1.2 का एरिया या 0.8 का जो आप इफेक्टिव ऑरिफिस एरिया ले रहे हैं, जब आप वेल्व को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, तो आप उसको बॉडी सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करके कहते हैं कि इससे ज़्यादा का एरिया वाला आपको वेल्व चाहिए. ये सर्जन के लिए यही आपका फार्मूला होता है, तो ताकि वो फिर उससे ज़्यादा का वेल्व सिलेक्ट करे, वरना अदरवाइज इट वुड बिहेव लाइक पेशेंट प्रोसेस मिसमैच. और इसमें मैंने सर ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ एको की एक ऐप है जो कि बड़ी हेल्पफुल है, वो आप उसी वक्त खोलें और वो उसी वक्त आपको तमाम वेल्व्स का इफेक्टिव ऑरिफिस एरिया बता देती है, ठीक है, कि जी ये इफेक्टिव ऑरिफिस एरिया है जो इस वेल्व का, ठीक है. तो फिर हमने कहते हैं जी कंपनी आप जो मर्जी कर लें चूज, लेकिन इफेक्टिव ऑरिफिस एरिया जो है वो ये होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोस्थेटिक वेल्व का, उस पर्टिकुलर प्रोस्थेटिक वेल्व इससे ऊपर होना चाहिए. हाँ, उसमें डॉक्टर लुबना आई थिंक थोड़ा सा तो इनबिल्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता ही है सब में, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जितना न्यू टेक्नोलॉजी से चीजें. और इसमें एक इंटरेस्टिंग सा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सोच है ये कि टिश्यू वाल्व्स जो होते हैं उनका ग्रेडियंट कम होता है, लेकिन जो टिश्यू वाल्व्स है उनका ग्रेडियंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मैकेनिकल. जो उसी साइज का सेम साइज में अगर आप मैकेनिकल वाल्व डाल रहे हैं तो उसका इफेक्टिव ऑरिफिस एरिया भी ज्यादा होगा और उसका ग्रेडियंट भी कम होगा. मैंने कहा ये इसमें ये देखें, ये सारा डिस्कशन बात का है. हमारा प्रॉब्लम तो पहला ये है कि वी आर नॉट असेसिंग द वाल्व, प्रोस्थेटिक वाल्व एडिक्वेटली. most of the time you will find at best the gradient, nothing else, and they will write the prosthetic valve with increased gradient. अभी आपका काम है कि क्यों है, जबकि एको का काम है कि जितने हमारे पैरामीटर्स हैं they take and they give the diagnosis कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. The patient process mismatch है, हाई फ्लो स्टेट है, और दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन है. तो नंबर 1 तो हमें ये यहाँ लोगों को, although it's not that difficult, लेकिन ये कि ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, तो वी हैव टू एजुकेट टाइम अगेन कि हम ये करें. दूसरे है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस सर्जन कि पीपीएम कुछ होता है. अभी तक तो मानने को तैयार नहीं थे कि पेशेंट प्रॉब्लम मिसमैच कोई चीज़ है. तो ग्रेजुअली दे आर रियलाइजिंग एंड आई थिंक ये एनेस्थीसिया का काम ये कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर वी आर डूइंग इंट्रोप्टी देयर तो देन दिस इज आवर जॉब. सर मेरा इसका कमेंट है. जी सर. सर जी प्लीज सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन और ये सारी असेसमेंट्स जो हैं ये तो हम बात के लिए कर रहे हैं. मेरा एक पॉइंट है जो हमें एक एज अ टीम एक ये बनाना चाहिए और इम्फेसाइज करना चाहिए कि जब भी प्रोस्थेटिक वाल्व का पेशेंट ऑपरेट होकर डिस्चार्ज हो रहा है, वी शुड एटलीस्ट राइट ग्रेडियंट्स एंड EOIs उस वक्त के, क्योंकि अगर वो बेसलाइन हमारे पास नहीं है वी कैन नॉट कंपेयर इट विद दी फंक्शन. और
इनिशियली फर्स्ट डे वाले को नहीं आप कर सकते, क्योंकि हम सब लोग जो करवाते हैं OR के अंदर शुरू में एक अच्छा 23 नंबर का भी सेंट ड्यूज का रीजेंट भी लगा होगा, तो उस पर ग्रेडियंट शुरू में मीन का 12-13 आ रहा होता है, लेकिन वो सारी चीजें जैसे आपने बताया वो फंक्शनल स्टेटस की वजह से है। तो ये एक हमें सर लाजमी करना चाहिए। और दूसरा सर फ़खर ने बता दिया कि EOAI निकालना ज़रूरी है। तो हमारे हर पेशेंट का वेट और हाइट होना है, तब हम बॉडी सरफेस एरिया निकालेंगे। जी सर, थैंक और- यू। और जी, फिर please. उसके बाद सर वही ऐप वाली, वो अक्सर लोगों को नहीं पता कि यू कैन ओपन अप, आप देख सकते हैं सेंट जूड्स है, कार्बोमेडिक्स है, वट कौन सा वेल्व साइज है, और उसके EOAIs और उनके मीन और पी ग्रेडियंट्स लिखे होते हैं। तो वी शुड राइट दैट इन कंपैरिजन टू दैट, सो बिल्कुल दैट सही है। वी Thank you. कैन हेल्प द पेशेंट। दीज आर वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स एंड आई थिंक वो जो मैंने पहली स्लाइड में की पॉइंट्स बताए थे, तो उसमें यही था कि एक बेस लाइन स्टडी हो तो बहुत अच्छा होता है, उससे कंपेरिजन में आसानी हो जाती है। एंड बॉडी सरफेस एरिया ज़रूरी है, हाइट वेट ज़रूरी है, जो कल लुबना भी कह रही थी। एंड उसके बगैर आप जाहिर इंडेक्स नहीं कर सकते। इंडेक्स करने के लिए दैट्स वेरी there is entity है, बड़ी well known entity है, which is called as thumbprint वो अभी study. कोई भी नहीं। तो thumbprint जो है वो बेसिकली प्रोस्थेटिक वाल्व डलने के बाद होता है। एग्जैक्ट टाइमिंग उसकी either it is 1 week or it is 6 weeks. I'm not sure about that, इसलिए मैंने it can be checked. तो for every patient who has got a prosthesis must have a thumbprint study to have the baseline gradients so that in future हमें comparison हो। मैं एग्जैक्टली यही बात करने वाला था जो सलमान ने की है। वी मस्ट कंसिडर कि किस वक्त की है, बिकॉज इमीडिएटली विद इन 1 वीक जो फ्लो स्टेटस है और बाकी सारी चीज़ें हैं, कंफाउंडिंग इफेक्ट से पैरामीटर्स फ़र्क होंगे। तो हमें पहली स्टडी का टाइम का इल्म होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है कि विद इन 1 वीक मरीज़ चला जाता है, दूर दूर से आया होता है, तो विद इन 1 वीक करनी पड़ती है, मजबूरी है। सो ग्रेडियंट्स एंड वेलोसिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी हाई आएंगी। आइडियली अबाउट अ मंथ पे करना चाहिए। और टेवी के बाद भी इसी तरह से फॉलो अप करना तो बड़ा ज़रूरी जी है। बिल्कुल टेवी में भी यही चीज़ें चलेंगी। जी। आई थिंक जो डॉक्टर सुहेल का पॉइंट था, ये बिल्कुल आई एग्री 100% के बेस लाइन स्टडी इज़ एसेंशियल। वो डॉक्टर सुहेल का भी जो पॉइंट था वो ये था कि जी हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो, एक सिस्टमैटिक वे में चलें। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि वो जो आपको अप्रोच बताइए वो सिस्टमैटिक ही है। सिर्फ आपने हिस्ट्री पहले की पॉइंट्स, फिर उसके बाद 2D, फिर डॉपलर एंड फिर एवरीथिंग। तो आपने बड़ा लंबा टॉपिक से बहुत थोड़े से टाइम में कवर कर लिया। 15 मिनट में टैवी जी से बिल्कुल, और इट्स इम्पॉसिबल टू Impossible. कवर। टैवी कैसे वैसे तक टैवी जो है से उसकी है ही बेस लाइन स्टडी के साथ कंपैरिजन है सारे, उसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है। तो ये भी एक टैवी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए बेस लाइन स्टडी जो है वो दैट मैटर्स अ लॉट।